Alright, so I've got these figures here. Now, which bank am I working on? I'm working on JS Bank, right? So I'm going to do JS Bank, and for JS Bank, where are the number of users? The number of users are given in app market share. App market share is here. So JS Bank has 2 million customers. Their rating bonus is about 70%. So unlike HBL and UBL, which have great apps and great user reviews, the JS Bank application is not that good. It's not that great. So customers don't sort of prefer to work with it. And then what I'm going to do is just beneath this. So I've got old, new, share, and spend. These 4 columns are the same. They're not going to change a lot. And where do they come from? What I've done is I've copied them here. This is new, so I'm just linking them. I'm just going to copy them. And then my third one is segment share for that income bucket. And then I have monthly spend, and monthly spend is simply this new number, right? Because I'm using new number by trell. Once I've done this, then my next step in the sequence is to copy and paste. So I have 9 of these. So there you go. That's 1, 2, 3, 4. So now the next piece for us is to estimate the share of the last 7 categories, excluding the first 2, and that number is 87.849. अब हम क्या करेंगे? Now we're going to go out and estimate our share of segment for each of these categories. So for the first segment, my JS Bank number of users are 2 million. So I lock this in FN F4, and then I multiply this with what? I multiply this with 51.343, and then I adjust it with 87.849. So that tells me that my JS Bank customers, bulk of my JS Bank customers are in the first category. Next thing to do is, because I've hard-coded, because I've sort of anchored the values, I can simply, so these are my JS Bank customers. Now, the challenge now is that if I sum this up, this adds up to 2 million customers as is. But my issue here is that with these 2 million customers, there will be some adjustment. Rams, ये segment share, ये जो है यहाँ पे इस वक्त ये यहाँ से आया. If आप इस formula को trace करेंगे तो you can see this will take you here. ये मैंने यहाँ पे side पे table बनाया है, right? But ये table कहाँ से आ रहा है? ये table आ रहा है आपके पास income से. If you go to the income tab here, income tab में आपके पास यहाँ पे segment share दिया हुआ है. Do you see this urban share 2023 का? ये यहाँ से आ रहा है. This is where it's coming from. This is part of your data set. This means the share of the population that belongs to that income segment. ये जो आपके पास data यहाँ पे, ये जो आपके पास लोग हैं, right? ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी income है 36,000 रुपए महीने, 36,000 रुपए साल. This is roughly equivalent to, at that point in time, to about $220 per year. इनका population share क्या है? इनका population share है, urban population का share 2023 के census के हिसाब से is about 2.1%. Similarly, वो लोग जिनकी income is up to $70,000 a year, वो कितने हैं? वो 0.1% population है. वो लोग जिनकी income $25,000 है साल की, वो 0.2% है. वो लोग जिनकी income $11,000 है, वो 1.5 है. फिर 3.6 है, फिर 5.7 है, फिर 2.5 है, and then so on and so forth, right? So हमने ये data यहाँ से लिया, and then on top of this data, if I come to this table, मैंने आपको बीच में एक segment update दिया था कि income level update हो गए 2023 के, और वो revised income level यही, because dollar का exchange rate change हो गया, right? ये revised income level, हम इनको इस्तेमाल करें. So ये revised income level क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी वो लोग जिनकी तनख्वाह 36,000 रुपए है, वो एक certain proportion of the population है. वो लोग जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, वो 58% of the population है. वो लोग जिनकी तनख्वाह 4 लाख रुपए महीना है, वो 30% of the population है. Which population? The urban population, right? And ये इनकी income bucket है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 buckets है. अच्छा, अब JS बैंक के केस में हमारे पास एक चैलेंज है. वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि ये जो हमारे पास कैटेगरीज हैं 5 एंड अबव, उनके ऊपर रेटिंग अप्लाई करती है, एप्लीकेशन की रेटिंग अप्लाई करती है, उस रेटिंग का बोनस अप्लाई करता है. तो बिकॉज JS बैंक की एप्लीकेशन रेटिंग कम है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये नंबर कम हो जाएंगे.
और ये कम कैसे होंगे, ये हो जाएगा 70%, we lock this in 70% of F1 F4 and we multiply this with 130. तो जहाँ पे पास उनके पास 1,30,000 कस्टमर्स थे, वहां पे उनके पास सिर्फ 90,000 कस्टमर्स रह जाएंगे, और जहां उनके पास 1000 कस्टमर थे, वहां पे उनके पास सिर्फ 800 कस्टमर्स रह जाएंगे in that given income bracket, right? So this is downward adjustment. लेकिन अब the challenge is going to be कि when you apply this adjustment, so ये जो कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी नंबर 4 ये अनचेंज रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. But when I apply these numbers, there is going to be a difference. And what is that difference? That difference is going to be a reduction in size. So अब इस reduction in size के अंदर इन दोनों का जो फर्क है, which is 1244, I'm going to use this and I'm going to plug this in here in the lowest category. So 1244 will go here, and what that will then do is when I sum this up again from top to bottom, the difference comes down to 0. So ये एक मेरी second adjustment है. So now once I've done this adjustment, what this has done is it has given me the list of customers by income bucket for JS Bank, and my second step is to convert this into what? My second step is हमने यहाँ पे हिसाब लगाया है कि इनकम जो है वो 0.1% ऑफ ट्रांसफर्स है, तो हमारा जो मंथली स्पेंड है वो 30,000 रुपए है. तो इस 30,000 रुपए के ऊपर आप लगा लें कि आपका फी कितनी बनेगी. तो आपकी फी बनेगी 0.1 इंटू 30.365, ये आ गया. एंड इसको आप एक्सटेंड कर लें, ये इधर आ गया. हमने इसको लॉक नहीं किया है तो इसको ये नंबर सही नहीं आ रहा, तो इसको सही कर लें. दिस इज K47 को लॉक कर लें FNF4 के साथ. FNF4, this is now locked, and then I just have to copy and paste this. There we go. So अब मेरे पास ये फिगर यहाँ पर आ गई. अच्छा, और अब ये एक कस्टमर के, हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं जो हमें 31 रुपए महीने के देते हैं इन टर्म्स ऑफ IBFT ट्रांसफर्स? वो हैं हमारे पास इन JS बैंक्स केस 1244. तो ये JS बैंक की फीस आ गई. अच्छा, और लेकिन ये इसमें हमने एक करेक्शन और करनी है. हाँ, ये JS बैंक की फीस, ये तो एक महीने की आई है, इसको हमने साल भर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें आप. So that is the fee estimate for JS Bank, and remove the zeros, so reduce the number of decimals, and then sum this up. Now when I sum this up, I need to make one more adjustment in that sum, and that adjustment is what? That adjustment is, I've got two factors. I have all the numbers that I have here are in thousands, so I need to multiply it by 1,000 to get the actual number, and then I want to divide this by the exchange rate, and that exchange rate is 286. So ये जो मैंने काम किया ना, ये मैंने गलत काम किया है, ये आपने नहीं काम करना है. You have to do this in a generalized fashion. So my recommendation is that you put the exchange rate, the 286 figure, in a nice cell, and so that all you need to do is change that cell and update the figure, because what's going to happen is कि when I get and I do the work, अगर मैंने आपको एक नई वैल्यू दी कि जी डॉलर डिप्रिशिएट कर गया है, रुपी डिप्रिशिएट कर गया है, इट्स नो लॉन्गर एट 286, इट इज नाउ एट 290, तो आपको हाथ से आके सारे सेल चेंज करने पड़ेंगे. तो डोंट डू दैट. अब द फाइनल क्वेश्चन इज कि ये तो आपने शेयर निकाल लिया. सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने JS बैंक का शेयर ऐड करना है. सो ऐसे JS बैंक का शेयर कितना है भाई आउट ऑफ द टोटल फीस? तो टोटल फीस क्या है स्टेट बैंक की? ये है 94.687. ये कहाँ से आ रही है? ये हम आपको भी बताते हैं, स्टेट बैंक की मास्टर फाइल से आ रही है. बट योर शेयर, JS बैंक शेयर ऑफ दिस फिगर इज, जो आपने भी कैलकुलेट किया है, is $4 million साल का, and this $4 million will get divided by 94, so that gives you the JS Bank share, which is about 4.5%. And I think the second question that you have in mind is कि ये JS Bank ने $4 million तो कमाए हैं, but ये कितने कस्टमर से कमाए हैं? There you go. So this is $4.29 million. Divide this by
this figure into 1000, bracket open and bracket close, and press enter. So for example, HBL ka share is about $3.4 per user per year. UBL का share is $3.4 per user per year. JS का share is $2.1 per user per share. अच्छा, अब आपको एक बात तो I hope समझ में आ गई होगी, and that you understand, right? Now that I've done these calculations for you and I've shown you these numbers and you have these numbers are only there for calibration purposes. Your actual exam question is going to be based on a different set of values. Let me do function F2. There you go. That's the formula. So J59 is the amount of money you've made, and N is the number of users that we have for JS Bank. So Rams, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि जो most likely variation है that is going to happen is if I go back to the deck here. Okay, so this is the deck, right? So on this deck you will see that एक है आपके पास income bucket, इसको hard code ना करें. So make sure that this is linked. एक है आपके पास segment share, इसको भी hard code ना करें. Make sure this is linked because I may give you a different income bucket for the exam question, and I may give you a slightly different segment share for the exam question. That's one. तो एक ये चीज हो सकती है. फिर एक और चीज आपके पास, और वो चीज क्या है, वो आपके पास ये है, which is the rating bonus. So right now the rating bonus is 250, 250, 70, 150. ये rating bonus change हो सकता है, तो इसको hard code ना करें, इसको भी link करें. ये तीन या चार components. Now if you look at the numbers, for example, in terms of users and market share, HBL का figure is 23%, 22%. लेकिन the fee income share is not 23%, it's 14%. And this is where you would need to calibrate it if you were doing this in real life. For the purpose of our exam and our assessment, we won't. We'll just work with the numbers as we have. Oh, अच्छा, you want to do age? So age के case में ये होगा कि अब हम आ जाए वापस JS के ऊपर. Come back to a spreadsheet. अब जो आपके पास नंबर आया ना, आपके पास नंबर ये आया है. These are the customers that you have by income bucket. And what you now need to do is you need to apply the age demographics. So age demographics का table हमने ऊपर बनाया हुआ है. पहले तो हम इसको copy कर लेते हैं अपने पास ताकि we have the relevant age buckets. There you go. अच्छा, अब ये आपकी पहली income. This is your first relevant income segment, which is segment number 3. तो सेगमेंट नंबर 3 में हम ये करेंगे कि हम ये लेंगे 1244, इसको लें, इसको लॉक करें पहले. सो FN F4 में सिर्फ ये R का कॉलम लॉक करें. सो विल गो अगेंस्ट R, एंड देन आपके पास एक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का टैब, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के टैब में आपके पास ये एज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, एंड दैट एज डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.25 फॉर एज 20 to 24. तो ये ले लें यहाँ से, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी एंड पेस्ट इट. आखिरी दो जो हैं वो नहीं आएंगे आपके पास, ये ले लें. जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यू शुड आस्क योरसेल्फ, यू शुड आस्क मी, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट सवाल. हमने एक स्टेप इसमें नहीं किया जो हमने ऊपर किया था व्हेन यू लुकिंग एट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने एडजस्टमेंट की थी फॉर द फैक्ट कि वी वर लुकिंग एंड वर्किंग विद अ स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट. व्हाई वी हैवंट डन दैट हियर? यहाँ पे क्यों नहीं किया हमने काम? नहीं, इट्स नॉट दैट. इट इज के जो हमने सेगमेंट इनकम सेगमेंट लिया था, उस इनकम सेगमेंट में हमारे पास जो पूरी एलोकेशन थी, दैट एलोकेशन वाज नॉट एडिंग अप टू 100%. इस केस में जो हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज एक्चुअली बाय हमने एक्चुअली 4 इनकम बकेट्स को एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाय इनकम बकेट, द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय एज ब्रैकेट. तो अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो क्वेश्चन इज कि ये जो सम हो रहा है ना 100, ये किधर सम हो रहा है? अगर ये इधर सम हो रहा था, if this was being summed by income distribution, if this was the case, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपने 4 को निकाल दिया है. बट ये तो ऐसे सम नहीं हो रहा, ये तो बाय एज ब्रैकेट सम हो रहा है. और अगर बाय एज ब्रैकेट सम हो रहा है तो डजंट मैटर कि आपने कितने सेगमेंट्स को निकाल दिया है, as long as you haven't taken out a given age bracket, you should be fine. Does that answer your question? समझ में आया आपको मैंने क्या पॉइंट कहा?
This adds up. So अगर आपने वहां पे वो adjustment नहीं की होती, for example if I go back to my model और जहां पे मैंने divide किया है इसको by let's say 87 for, let's say if I turn this to 1, what do you think is going to happen? If I turn this to 1, what you'll see is कि ये जो number है ना आपका, जो अभी 2 million पैड अप हो रहा है, ये 2 million पैड अप नहीं होगा. So if I just change this to 1, so अब मैं इसको 1 कर देता हूँ. So this is now at 100%, right? I assume just change it to 1. So आप देख रहे हैं आपके पास कितने होने चाहिए थे? 2 मिलियन होने चाहिए थे, बट आपके पास 1700, you have 1757. Why? Because you have not adjusted for the fact that the segment that you're working with is not the complete population. It is a select sector of the population. So what we've done is we've done 3 things. We walked through a high level review of the pre-release update decks जिसमें मैंने आपके पास नई information भेजी है. I walk you through the calculations for UBL and HBL, and I've just done the calculations for JS in front of you, and I've done the calculation for both the income distribution and the age distribution. So you have 3 examples, and आपके पास rating bonus is given. We just used it as is, and then आपके पास जो काम आपने करना है वो आपने काम करना है सिर्फ on the top 6 ये. So HBL से बैंक अल फला तक इस पे काम कर लें, इसके नंबर्स निकाल लें, और जब आप नंबर्स निकालें तो डू देम ऑन अ जनरलाइज्ड बेसिस. जो बाकी हैं आपके पास एमसीबी, हबीब मेट्रो, फैसल, एससीबी, दुबई इस्लामिक, स्नैरी एंड सिल्क, आई विल नॉट पोज क्वेश्चंस ऑन देम. मैंने कर तो दिए, आपको बता भी दिया, लेकिन मैंने आपको जो करके दिए वो आपके अभी करंट वैल्यू के साथ करके दिए हैं. जो आपके पास सवाल आएगा वो सवाल इन वैल्यू के साथ नहीं आएगा. सो मेक देम इन अ जनरलाइज्ड फैशन. हाँ, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है हमने इसके अंदर, राइट. So I may come back and tell you that, so I may come back and say that this actually adds up to 70,000 and 2 lakh. So I may give this as an entry कि जी ये है income bucket जो आप इस्तेमाल करेंगे for your calculations. And then this would be, let's say 800,000, so 1.5 million. And then this would be 2.5 million, 5 million, this would be 10 million, this would be, let's say 25. So this would be, so I can just give you this as a new income bucket. Or I may come back and say कि ये जो proportion है, ये 0.052 लिखा हुआ है, ये actually banking population में मुख्तलिफ होगा, this may actually be 0.9%. So this and this may change. So when you build it on generalized fashion. Yes, Saad, you're absolutely right. Everything and anything that can change can change. So build it in a fashion where the values are not hard coded. So अब आप, अगर आपको मैं ये बताऊं कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं. So for example, अब हमने assume ये किया हुआ है कि जी USD exchange rate जो है, जो हम अपने calculation conversion में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है 286. अभी मैंने hard code किया हुआ है. So let's say ऐसे जी USD exchange rate 300 हो गया. तो अब जब मैंने से कि USD exchange rate 300 हो गया और आप conversion के लिए इस्तेमाल करें and use this for updating your calculations. So यहाँ पे मैंने USD exchange rate 286 hard code किया हुआ है. So ये ना करें, इसको इससे लिंक कर लें. Similarly अगर मैं नीचे चला जाऊं, if I go to UBL के केस में भी ये नंबर यहाँ पे hard code हुआ है. तो इसको ये ना करें, इसको जो actual modified, एक जगह पे आप value change करें. When you change the value at that specific slot, it should change everywhere. And then similarly, if I go back here, किधर हैं आप? JS के केस में, JS के केस में ये नंबर है यहाँ पे. So yeah, this 286 should not be hard coded as 286. It should be linked to a cell. So you just change this cell and all the values. So आपकी जो expected output है, that expected output would basically have an income distribution and will have an age distribution.
and there are a wide variation of questions I can ask, but these are questions only with respect to income and age distribution. Then there's the SBP data set also, and the SBP data set is a set that you're already familiar with. उसमें कुछ चीजें मैंने add कर दी हैं, so there are new fields to it, and there's one more row of data that has been added, which is the most recent data set जो अभी report आई इनकी, मैं ख्याल 15-20 दिन पहले, तो वो हमने इसमें add कर दी है. And इसमें भी अगर आप देखें तो you can see कि ये अब मोबाइल बैंकिंग यूजर रेवेन्यू आ रहा है आपके पास. इस केस में अगर आप देखें तो ये जो 4 क्वार्टर्स हैं, if I take the sum of these 4 quarters, the annual mobile banking user revenue estimate is coming out to be $6.38. लेकिन हमारे पास हबीब बैंक के केस में, यूबीएल के केस में, जेएस बैंक के केस में ये नंबर तो बहुत कम आ रहा है. तो इसकी वजह क्या है? Why is this the case? Why is this happening? And अगर आप यहाँ पे देखें, फैक्टर तो वही लगा हुआ है 0.1% वाला, और ये हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? So one of the factors that you need to look at is, for example, अगर मैं ये सारा वॉल्यूम ले लूं जो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है अपने मार्केट शेयर के अंदर, so जो मेरा cumulative share आएगा, right? My cumulative share of all transactions that happen product of my monthly spend and the multiplication of this with the number of adjusted users I have, right? So I'm using, for example, in this case, the HBL figure. So HBL के केस के अंदर जो total volume transact हुआ है इस वक्त of the income and the number of users I have, what is the value of that, right? So it's about 324 billion, because I need to multiply this with the 1000. And how does this volume compare with the volume that has been booked? ये हमने सिर्फ HBL की बात की है कि अगर HBL के केस में ये तमाम के तमाम लोग सारे के सारे पैसे खर्च करते हैं, सो 324 बिलियन रुपए इन्होंने खर्च किए हैं in a given month, and then if I multiply this by 12, then this is what they spent in the full year. So about 3.8 trillion rupees खर्च किया है. और हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है in SBP मास्टर PKR टर्म्स के अंदर वो क्या है? So वो किधर आता है आपके पास? ये आ रहा है आपके पास. तो जो साल का वॉल्यूम है वो है 23, this is in billions, so that's 23 trillion rupees, right? So this says that 23 trillion rupees is the amount of volume that was transacted, and we use that as a basis for our calculation. लेकिन जब हम यहाँ पर आके देखते हैं तो ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ 3 ट्रिलियन HBL ने ट्रांजैक्ट किया है, राइट? And because HBL only transacted 3 trillion out of 4 लगा लें आप, so that's about 40% of the volume. So the volume is there, but the fee doesn't tie in. So there's something that is missing. So you'll have to figure that piece out. Last 4 quarters. Yes, I can. Saad, I can change that. ठीक है जी. So this covers this piece. अच्छा, dogs मैंने आपको भेज दिए थे, तो everybody has the dogs. Data set आपके पास आ गया है, so you have this. I think the only thing that's now remaining is the algorithmic questions. तो वो तो आप, you guys are mashallah very very sharp and bright. तो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. You guys will do very well on that side.